Hello guys. So कुछ नहीं, आज मेरा मूड काफी ऑफ था क्योंकि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स मूड तो ऑफ होगा ही, बिना मतलब का मूड खराब हो जाता है। सो लेट्स, आज मैं मैश वाटर पे काम करूंगी। सो इफ यू डोंट नो, मैं ये दिखा देती हूँ कि हमारा पूरा कैरेक्टर तो हो गया। अभी तो फ्लोटिंग डेथ भी बनाना है, लेकिन वो मैश के बाद करूंगी। उसके बाद एनिमी लास्ट में ऐड करूंगी, यू नो, क्योंकि अभी मुझे काफी वीडियो एडिटिंग करनी है भाई साहब, क्योंकि ये वीडियो अपलोड नहीं की इससे रिलेटेड। देखो भाई, मुझे अपने यूनिटी का पासवर्ड तक याद नहीं है, सब कुछ लिख के रखना है ना। एगा गया तो सब गया, यू नो। मैंने रखा हुआ है स्क्रीनशॉट लेकर के सारा पासवर्ड, ईमेल जाकर लिखूंगी यार, याद आया। इसकी आवाज अच्छी नहीं है चलने की कुछ भी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए लगाया, लेकिन बाद में मैं ठीक कर दूंगी इसे। W को होल्ड किया रहना है। यहाँ पे मुझे वो टेलीपोर्ट लगाना है, यू नो। एक मिनट, ये यहाँ पे क्यों पहुंच जा रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें मैंने रिजिड बॉडी लगा दिया था ना। मैं भी इसमें और करूंगी, लाइट लगाऊंगी ना तो मस्त लगेगा। एनिमी लास्ट में बनाऊंगी। और मैं इसमें वो भी लगाऊंगी, क्या कहते हैं, जब ये ऊपर उठेगा ना तो यहाँ उसके पैर के नीचे से लाइट निकलेगी। तो चलो मैश वाटर बनाते हैं। मुझे पता नहीं है कैसे बनाते हैं, बट वी विल लर्न। मेरे पास वीडियो है। ये चीज हट क्यों नहीं रही, मेरे को समझ में नहीं आ रही यार। आई नीड दिस। इसे हटाते हैं। इसे मैं डिलीट नहीं कर सकती क्या? क्या मैं डिलीट कर देती? साउंड ही डिलीट हो गया। बैक कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ ये हट जाए। तो इसे मैं कहीं और रख देती हूँ ना। चलो रहने देते हैं तब तक के लिए। क्या ही कर रहा है मेरा। लास्ट में हटा दूंगी इसे। ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सोचो लाइट लगा दूंगी, एनिमीज आएंगे तो और कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मुझे इस पे लिमिट भी लगाना है जंप में, ये 3 से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगा। और उसे चढ़ना हो तो ऐसे है ना, W क्लिक करो, ऊपर चढ़ जाओ। W क्लिक करो, ऊपर चढ़ जाओ। फिर W क्लिक करो, ऊपर चढ़ जाओ। एक तो ये गलत पोजीशन पे चढ़ जा रहा है।
यहाँ पे क्लाइंब नहीं लगा हुआ। एक काम करती हूँ, शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, तब तक सही रहेगा मेरे लिए, वही सही रहेगा। बिकॉज वीडियो के चक्कर में वीडियो में फुल बनाऊंगी, तो शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं। अरे विल बी फाइन। तो चलो मैश वाटर पे काम करते हैं। अभी तो मुझे डिजाइन करना है कि कैसा होगा ये। चलो देखते हैं। अभी मेरे पास 20 दिन है, 20 दिन में ये चीजें खत्म करनी है मुझे। अब क्यों खत्म करनी है? बिकॉज 19 जून को गेम जैम है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे 7 दिन के अंदर मार्च 2026 में। हाँ देखो, यस ये लोग फियर अंदर डर डाल रहे हैं। सीखना तो फिर भी पड़ेगा। ये सब अंदर डर डाल के कोर्स सेल करते हैं, क्योंकि वो डर से ही पैसे कमाते हैं। इसे हटाओ पहले, क्योंकि जो होना होगा तो वो तो होगा ही, पता है, जो होना होगा तो वो होगा ही। We can't do anything. What I can do is just learn. हाँ, ये कहाँ गया हिस्ट्री? अरे प्लेलिस्ट, सॉरी, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट नहीं, गेम डेवलपमेंट। कहाँ गया मैश? Awesome mesh. Make a mesh dynamically through code. This is extremely useful in many scenarios. Yeah, I have to learn. टिप्स ही खोलते हैं। मिनी बॉक्स शूटर, क्या क्या किया उसने? create a name, acid water, add mesh water, mesh finger, create a script, acid water, mesh. In script define 4 verticals, bottom line, top level, define 2 triangle to make square. तो सबसे पहले हम लोग पहले इसे फॉलो करते हैं। Like for making a custom animation system, as you will soon see, and making mesh alpha, consider subscribe. Okay, so let's first talk about how useful it is to be able to make dynamic meshes. Meshes are used to render everything, as you will soon see, and making meshes through code allows you to dynamically generate interesting shapes on the fly. We can modify the vertices and what part of the texture is rendered, which allows for very useful effects. एक बार देख लूँ mesh. What is mesh and vertices? Vertices are the points, right? 3D computer graphic modeling. A mesh is the overall 3D structure of a skeleton of an object, while vertices and individual point and act as a building block of the mesh. Okay. In Unity, words. In Unity, vertex is simply a single corner points in 3D spaces, and a mesh is a 3D shape. तो एक मैश होता है जिससे हम किसी तरह भी me mesh is something we can give any shape using vertices, which is points. A vertex is a single coordinate point, and mesh is the entire 3D shape made by connecting
those points में shape made by एक shape होता है जो made by connected to points, मतलब उस points को connect करके एक mesh बनता है, मतलब एक पूरा object बनता है उस mesh को. Vertices. A vertex is a single dot in 3D space. It's a unity exact where the corner shares x, y, z coordinate. For example, simple 3D cube and have 8 vertices. Single 3D cube have 8 3D cube have 8 vertices. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, 8 vertices. One of each corner. Mesh entire completed shape. उस पॉइंट्स बना के जो शेप बना, मतलब मैश होता है कि उन वर्टिसेस को बना करके जो भी शेप बना, इट इज फॉर्म to draw a line between the vertices to create an angle, filling them into the make of solid scene. It's formed when a unity draws lines between the vertices to create triangle. Between the vertices to create triangle, filling them into make a solid scheme. It's a form when unity draws line between the vertices, मतलब vertices between line create करती है, triangle बनाती है और filling them into make solid scheme. As we see in the 3D game, a sword, a character, sword and character or a caster is a mesh. Okay. Using it as a single shape. Mesh is the final object and you build or change the shape by moving two vertices. Shape changes. To stretch an object, you grab a group of vertices and pull them further away. Now, to make something bumpy, you push some vertices up and another down. To make a curve, you add more vertices. Yes, more vertices all together so curve looks smooth instead of sharp. Or perfect. Think of a digital mesh like a piece of cloth. This digital mesh like a piece of cloth or a wire mesh. Two vertices are the places where the wire cross. And if you pull one on one vertex, the cloth stretches and changes shape. Would you like to see? Polygons. What is polygons in horizon? And why we have to make anything? Polygon is a flat, closed shape made of straight line like a triangle square. Polygon is a flat, is any flat closed shape. Polygon is any flat closed shape made of straight line like a triangle square. Pentagon. 3D game. Use triangle spell to make everything. Triangle are always flat. 3 points always sit two. Points always sit perfectly on the single flat plane. If you have a four-sided square, pull one corner up. The square will move sharp. Computer cannot easily calculate how light bounce off a bent surface. Triangle never bend, so they are easy to calculate. Computer can easily calculate how light bounces off a bent surface. Oh, triangle are fast for graphic card. Graphic card. Graphic hardware is hardwired to do one thing incredibly fast. Dot triangle. Graphic hardware is hardwired to do one thing incredibly fast. Dot triangles. मतलब ग्राफिक कार्ड जो होते हैं डॉट ट्रायंगल्स बहुत अच्छे से कर देते हैं. क्यों करते हैं वो मुझे जानने का कोई मतलब नहीं है. By breaking every complex shape down into triangles, the computer only has to solve one math problem over and over again. You can do anything with that. Just Lego bricks, you can stick winners around triangles together to form curves, character, and giant looking world. Okay, gotcha! One of the recent videos was covering a radar chart in the UI, and the shape for that radar is using a custom mesh. The environment heat map used in Battle Royale Tycoon along with the floor tiles are all based on dynamic meshes. Another example is simply the animation system that I use in my videos. Each unit is a single mesh that is dynamically composed of multiple quads that display certain parts of the texture. Is simply
simply the animation system that I use in my video. The environment heat map used in Battle Royale Tycoon, Oh, I want the mesh one. along with the floor tiles, are all based on dynamic meshes. Another example is simply the animation system that I use in my videos. Each unit is a single mesh that is dynamically composed of multiple quads that display certain parts of the texture. Also, the persistent is also mesh-based. Each particle is a single quad that moves its vertices until it comes to a complete stop. So this is just a sample of all the awesome stuff you can create once you know how to create custom dynamic meshes. So in this video, we're going to learn how to create a mesh completely from scratch. We're going to see how something is rendered on you can create once you know how to create custom dynamic meshes. So in this video, we're going to learn how to create a mesh completely from scratch. We're going to see how something is rendered on screen. Then we're going to learn to create the mesh object in code, learn what size each of the mesh elements need We're gonna do it together. to be, draw a triangle, then apply how something is rendered on screen. Then we're going to learn to create the mesh object in code, each of the mesh elements need to be, draw a triangle, then apply a texture to it, and Draw a triangle, then apply texture finally to draw it. another triangle. Then finally draw another triangle, and finally draw To another. create a square. With that, you will know everything you need to know in order to make your own custom meshes to create your own specific awesome systems. And then in the end, I will expand upon the code to make some examples of custom meshes in action, like a floor tile and a animation system. Okay, so now that we've seen just how useful it is being able to make a mesh through code, let's talk about how something is actually rendered on screen. So here is my empty scene. Over here in the hierarchy, you can see that all I have is the UI and a simple camera. And the camera, as you can see, it is rendering completely in black. Now here I make a new game object, and again, still nothing is rendered. Now I add a mesh filter. Wait, I'm gonna do the same thing. But let me check out the task we did. Okay. क्लाइंट वाला हमने कर लिया, साउंड इफेक्ट हमने डाल लिया जो बकवास था, जिसे मैं फिर से फिर से पूरा करूंगी. So we did all of these: spike enemy, that trial, box die, down jump, idle shoot, walking box shoot, box jump, box move, up jump, sound effect. Second that crime, we did all of these. What we need to do now, तो पहले ये पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर अपना टास्क बनाएंगे. ये क्या था? हाँ, तो हमने पहले क्या किया था, मतलब कुछ दिन पहले पेंडुलम सेट कर लिया था, पोल एनिमेशन कर लिया था, स्पाइक एनिमेशन बना दिया था, एयर मूव फ्लोर भी कर दिया था. एयर मूव फ्लोर ये था, कहाँ गया ये वाला देख रहे हो, एयर मूव फ्लोर. इसमें तो थोड़ा सा और अच्छे से करना था कि ऑब्जेक्ट के साथ मूव करेंगे ना, काफी चीजें इसमें सीखनी है. तो हमें बस ये वाला पहले ग्रीन एसिड वाटर कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद अलग से टास्क बनाएंगे कि कितना क्या क्या करना है. सो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. पहले इन सबको ठीक करना है मेरे को, पहले एसिड वाटर बनाते हैं फिर ठीक करते हैं. एसिड वाटर काफी कम ही रहेगा, लाइक यहाँ तक. ये नीचे इतना मूव कर रहा है तो एसिड वाटर ज्यादा नहीं रहेगा, यहाँ तक रहेगा, छोटू सा रहेगा एसिड वाटर. और उसमें गिरेगा तो फ्लोटिंग डेथ, और एसिड वाटर बनेगा ग्रीन कलर का. और मैं उसमें डालूंगी कलर, लाइक लाइट ग्लो करे वो. तो सबसे पहले सिंपल बनाते हैं, सिंपल को मूव करवाएंगे, फिर बाद में ग्लो बनाएंगे. ग्लो में तब डालूंगी जब इसमें ढेर सारा लाइट्स डालूंगी ना, जब अंधेरा करूंगी इसमें. मैंने विल डू अंधेरा इन दैट. और सबसे हार्ड जो एनिमी वाला होने वाला है, जिसमें मेरी फटने वाली है, वो मैं लास्ट में करूंगी, क्योंकि उसमें काफी दिन लग जाएगा मुझे समझने में, करने में, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस डालना है. तो व्हाट वी गोना डू, empty object, I'm gonna name it acid water as he said. क्योंकि ऐसे देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जब मैं फॉलो करती जाऊंगी ना तो चीजें समझ में आने लगेंगी. एसिड वाटर, पहले इसका प्रीफैब बनाते हैं हम. वेयर इज द प्रीफैब डूड?
साउंड ऑब्जेक्ट का प्रीफैब है, प्लेयर कैरेक्टर का तो हम एसिड वाटर का भी प्रीफैब बना लेते हैं। बन गया एसिड वाटर का प्रीफैब। फिर हमने क्या ऐड करना है, हमने मैश फिल्टर and a mesh renderer. रेंडर And again, still nothing visible. मैश रेंडर मैश filter and mesh renderer. Okay. However, now I go in here and I set a mesh. Let's use the default quad. And now finally, कहाँ गया था ये? and a mesh renderer. And again, still nothing visible. However, now I go in here and I set a mesh. Let's use the default quad. And now finally, you can see something. Mesh. What? Okay. I don't know where it is. Acid water. I really don't know what I am even doing. कहाँ है ये? पता नहीं क्या कैसे करूँगी मैं। पहले AI से पूछ लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता। तो I have to select. Do you have to answer very short, because I don't want any kind of confusing because I am following a tutorial of mesh, how to make anything with mesh. So he's not telling how to make water, just telling how we can square out anything. So I don't need any confusion, but I am following him and trying on water. So here is my question. अगर मैं चली जाऊँ तो समझ लेना कि लाइट चला गया. Here's my question is, would I have to select the squad in mesh filter? No, leave mesh filter empty. Yes, and mesh. But he is doing it. If he selects squad in mesh filter, multi-built-in mesh. But for custom mesh, water mesh, you don't select squad. If you want mesh filter, built-in squad, select squad. Custom water mesh, maybe script water mesh. If set is not what he does, but for water, custom mesh. Custom mesh. मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी.
ये भी सेलेक्ट करते हैं, देखते क्या होता है। ओके स्टार्ट। Let's increase it. And now I drag a material onto it, and there you go, we can now view our texture. Why I can't see? So these are the two core components that we can see something. Let's increase it. And now I don't know what I am doing. चलो करते हैं लोग क्या। Now I drag a material onto it, and there you go, we can now view our texture. So these are the two core components that we need in order to render something on screen. We have a mesh and a mesh renderer. The mesh is what defines the shape that is rendered, and the material contains the texture data to be applied to that mesh. Okay, here. As you may know, computer graphics are made using polygons, so triangles. And over here I have chosen the default quad mesh. And in order to make a quad or a square, we need two polygons or two triangles. And if we go in here on our scene, we can select, here it is currently shaded, and we select wireframe instead. And you can See. Wireframe. see indeed that our quad is made up of two polygons. Wireframe.
Why I don't have wireframe? So here we have one, and down here we have another. So you put two of them together and we have a nice square making a quad mesh. The sprite renderer works exactly in the same way. So if you go in here, create a new sprite, there it is, the sprite render, drag the sprite, and here you can see the sprite render does exactly the same thing. Also has a quad with 2 polygons. Alright, so now that we've seen how something is rendered on screen, let's see how we can dynamically create a mesh through code. So let's make a script to test our code. So in here, make a new C# script. Let's call it our test. Is rendered on screen. Let's see how we can dynamically create a mesh through code. So let's make a script to test our code. So in here, make a new C# script. Let's call it our testing. Let's make a new game object, call it testing, and drag the script onto it. Okay. Now here. Oh, I don't have to do this then. Maybe yes or not. I don't know. इसे नन पे रखते हैं और ऐसे वाटर पे स्क्रिप्ट लगाते हैं ऐसे वाटर ऐसे वाटर Where is it? You are trying to save the private continuously. Oh, I have. Oh. Na, 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 na. Don't go sad, Here. Alright, so now that we've seen how something is rendered on screen, let's see how we can dynamically create a mesh through. Dynamically create a mesh. What does he mean? Dynamically create mesh. In a very short time.
Then I will create make mesh with code at runtime. Squares are URL, code में vertices, triangle, assign to mesh filter, dynamic vertices, make vertices होता है उसका triangle, फिर मैं add to mesh filter. Code. So let's make a script to test our code. So in here, make a new C# script. Let's call it our testing. Let's make a new game object, call it testing, and drag the script onto it. Okay. Now here in our script, let's first just go into our private void start and do a simple debug.log just to make sure that our script is running. Okay. So let's do it. Public void. I love that, you know. I love that person. कोड मंकी बहुत अच्छे चीजों समझाता है. पहले जब मैंने इसकी वीडियो देखना शुरू की थी तो मुझे इसका एक्सेंट समझ ही नहीं आ रहा था. फिर बाद में कुछ और वीडियो जब शीशा सीख रही थी तो अब इसके और वीडियोस देखे, धीरे धीरे वीडियोस देखते थे इसका एक्सेंट मुझे समझ में आने लगा. यस भूल जाते हैं क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है. Start. Let's play. So में जाएंगे. हमें ने और ही नहीं किया. Okay, let's see the console, and we have our console saying test. Console, Okay, great. Debug.log just to make sure that our script is running. Private void. इससे तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए था. कोई कंडीशन लगा ही नहीं, फिर भी शो तो करना चाहिए. मेरा तो काम ही नहीं कर रहा. Okay, let's see the console, and we have our console saying test. Okay, great. So our script is running correctly. Now in here, let's start by creating a mesh. So it's going to be an object of type mesh. Let's call it mesh, and we just do new mesh. Alright, there's our mesh object. Mesh object. So what I need to do, I have to remove this component. Remove this component. Just yes. What we need to do is create a mesh. Mesh mesh क्योंकि पहले में हमें स्टार्ट चाहिए. mesh new mesh. Here we created a new mesh to
to use installer to use stone coloring. However, like this, all we've done is create a mesh in memory. It doesn't really exist in our scene. Memory में create हो गया, scene में create किया, we created a new mesh in memory, not in scene. To use installer. In order to show our mesh, like we saw, one of the things we need is a mesh filter. So here in our testing object, let's add a mesh filter. And now we can go back into our code, and here we get the component of type mesh filter, and we set the mesh to be our newly created mesh. A mesh, we set the mesh to be our, and you create any mesh. Okay. मतलब इस component का mesh create करोगे. Mesh filter. What? Filter. Get component. ये उल्टा क्यों लिखा है डोर? मैं सोच रही थी ये क्या लिख दिया. ऐसे लिखना है. Mesh get component mesh filter. ऐसे लेते हैं ना. Yes. Dot mesh. डॉट मैश मतलब एक न्यू मैश बना, उसमें हमने मैश फिल्टर ले लिया. And now we created mesh in scene to show. मतलब यहाँ पे हमने मेमोरी में मैश क्रिएट किया बनाने के लिए जो हम चाहते हैं, और फिर हमने उसी मेमोरी में हमने क्रिएट करने के लिए मैश फिल्टर यूज कर लिया. Okay, now let's test. Okay, here we are, and still nothing is visible. However, if we inspect in here on our mesh filter, we can see that there's something in there. And if we double click, we can now inspect the mesh, and we can see that it has 0 vertices and 0 triangles. Okay, now save करूँगी ना आपसे. I think थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने भलाई. I can't see anything, dude. कुछ दिख ही नहीं रहा. I am not able to see. नन क्यों दिखा रहा है मेरे में? Do I have something more? मैंने तो उसे कमेंट आउट कर लिया था ना. मेरा वाला काहे नहीं दिखा रहा भाई? यहाँ से मैं स्क्रिप्ट वर्क ही नहीं कर रहा. हम दिखा रहा है. इसे तो मैंने सभी कमेंट आउट कर दिया था, तो उसका कोई सेंस तो बनता है ही नो. ये लज डिटेक्शन मैंने क्या बना रखा है, हटा है. इसे मैं हमेशा के लिए कैसे खत्म करूं?
ये क्या क्या बना रखा है डूड? साउंड Oh no. What guy? Dude, why my script is not working? Even not showing that debug one and not even showing when I created mesh filter. Like, see, none is showing on mesh filter component. The problem with script is wrong. New mesh. Create a new mesh in mesh. Override a mesh with whatever mesh we already have, which is nothing. Second line is the first line. अच्छा तो इस तरह ही करना है. If I go the second line, override a mesh with assign a new mesh to filter. Oh, इसलिए उल्टा लिखा था क्योंकि वो न्यू मैश को मैश से असाइन कर रहा था वो मैं न्यू मैश को मैश फिल्टर से असाइन कर रही थी. ओ मुझे लगा कि वो अपना स्टाइल लगा रहे. नो, सो एक्चुअली वो न्यू मैश को उसमें डाल रहा था. Still showing none. Fix. Remove the second line. Why no debug script not attached as model? Check. Text. There is no reference. There's nothing. ये क्या हो रहा?
mesh filter. स्क्रिप्ट जो अटैच है चेकड है. water object to attached do. What you should see after that? Mesh water. I did that door. एक गेम ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, उसी में इसी को डाल देती हूँ. एक मिनट. गेम ऑब्जेक्ट ऐसे 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 वाला वाला. हो गया भाई मेरा. ये तो शो कर रहा है, इसी को इसी में डाल देती हूँ. ये अब काम कर रहा है. हाँ दिखा रहा है अब तो. नो वर्टेक्सेस, जीरो ट्रायंगल. मैं भी इसको ना करने पे भी हो सकता है रन करवाने पे हो रहा हूँ. बिना रन करवाए भी तो नहीं चल रहा. अब चला के देखते हैं क्या होता है. रन टाइम पे हो रहा है. देखते दिखा के एक मिनट डिफरेंस है या नहीं मैं देखती हूँ. इसे कमेंट आउट करते हैं. मुझे पता ही नहीं ना, मैं सीख रही हूँ तो मुझे कैसे पता होगा कि क्या क्या हो रहा है. अब मैंने इसे ऑफ कर दिया. अब दिखाते हैं वो वाला मैश जो ऑब्जेक्ट था थोड़ा थोड़ा ग्रिड ग्रिड वो स्क्वाड दिखा रहा है. नहीं ऐसा वाला स्क्वाड इसके अंदर अब दिखा रहा है चलते टाइम. नन. इसका मतलब रन टाइम पे चल रहा है. इसका मतलब मेरा स्क्रिप्ट सही है. सही है, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसको थोड़ा आगे ट्राई करती हूँ. यहाँ से काटते हैं, इसे यहाँ पे लगा के देखते हैं. देखने में क्या होता है. मैश में कंपोनेंट को डालो या फिर कंपोनेंट को मैश में डालो, क्या ही मतलब है. हो भी सकता है मतलब. I just wanna see there is मतलब or not. ओह तो गलत था मेरा. गलत था. स्क्रिप्ट को डाल देना है. गलत था मैंने. ओके we can fix it. Why this? End node. It's showing quad only on runtime. Not when
stop showing none. The normal man, that's a normal behavior. Why am I disabled when you stop? Runtime play, edit mode. Script create mesh, mesh is temporary. Uses square, mesh disappear. Working on intent, back to normal line. Script create mesh only when the game is running. Why get component running? Get component filter. Find mesh filter on the subject. Mesh filter मिल गया है. Mesh. The mesh inside that component. Mesh. Assign your mesh to it. अच्छा तो मैश फिल्टर ढूंढता है और न्यू मैश मतलब जिससे हम उसको वर्टेक्सेस बनाएंगे उससे मैश फिल्टर से अटैच कर देता है ताकि हम जो भी मतलब हम लोग यूज कर सकें. नाउ दैट्स this line connects your creator mesh to the mesh filter. Right. Become visible. So this line connect your created mesh to the mesh filter. अच्छा mesh filter से ये connect कर रहा है new mesh को जो हमने मेमोरी में बनाया था और इससे mesh filter से connect कर रहा है. So we can whatever. So we make whatever it goes show whatever it mesh memory. So we make whatever with mesh. So we can make whatever with mesh which we created in memory. So it could like on save using mesh filter. Use that mesh. User code was wrong because what you wrote step create mesh in memory overwrite it with empty mesh. और the empty mesh में मैंने mesh filter डाल दिया था. Step 2 is step 1. Step 2 is mesh. Empty mesh. What you should write create mesh in memory. Assign it to mesh filter. अच्छा हमने मैश असाइन कर दिया मतलब ये न्यू मैश को हमने इसमें डाल दिया ताकि यूजर हो सके. Wrong. Right. Assign empty mesh to the variable. Assign a mesh to mesh filter ताकि हम मैश जो भी बनाया वो लेफ्ट साइड मतलब ओवररिटन. अच्छा किस चीज को अपडेट करने के लिए हम साइड लिखते हैं और साइड राइट साइड पर साइन I should component I should comment it on my space and here we put mesh variable into mesh variable into mesh filter because whatever we make with mesh which is currently entity that could be visible using mesh filter. We can't write because left side what got overwritten and
was whatever was very good left side. It get overlay left side. What do you say? Okay. I just want to see there is matlab or not. Here we get the component of type mesh filter, and we set the mesh to the originally created mesh. Okay, now let's test. Okay, here we are, and still nothing is visible. However, if we inspect in here on our mesh filter, we can see that there's something in there. And if we double click, we can now inspect the mesh, and we can see that it has 0 vertices and 0 triangles. So the mesh has no data, but There's no data. Data. हो ही जाएगा just. ओ मैंने इसे अपडेट नहीं किया ना. आज भी मुबारक इश्क मुबारक. Index 0 unit 1 summation 0 0 triangle 0 indices starting from 0 bounces set 0 0 bounces size 0 0 0 bounce size 0 right number 4 level or detail 1 level 0 triangle 0 you will out why okay. So we did manage to create an assignment. Okay, so far so good. All right. Now let's set up the vertices and triangles. Yeah. Over here, back in our code, when we create the mesh, there are 3 fields that we need to set. We need to set 3 fields. What it is? With the points. Array of vector 3s. Vertices represent each vertex. Represent. Okay. In the mesh, there are 3 fields. That we need to set. We need to set the vertices, which is an array of vectors. Array of vector. Vertices, which is array of vector. Vector name. 5 vertices. 5 vertices are array of vector. Array of vector is used because a mesh needs a numbered shopping list of points. अच्छा ढेर सारे points चाहिए position each points need 3 number to exit in 3D space. Array vector is used because a mesh needs a numbered shopping list of points. ढेर सारे points होते हैं. Each points need 3 numbers to exist in 3D points. 3 number होता है x y z. By vector hold 3 numbers x y z. Each points need
that tells unity exactly where a single vertex sits: left, right, up, down, backward, forward, backward, forward. Why array? Array is just the order list: 0, 1, 2. Unity needs this exact order so it know which point to connect. For example, draw a triangle between point 0, point 1, point 2. Think of it like a connector dot spoke. The exact grid point of dot 1 array the entire book page holding dot 1, dot 2, dot 3 in a row. Okay. मतलब इसका मतलब array of वेक्टर इसीलिए चाहिए क्योंकि ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, ढेर सारे वर्टेक्स होते हैं और हर एक वर्टेक्स किस जगह किस पोजीशन पे है, मतलब एक्स वाई जेड पोजीशन पे है, तो हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए और एरे चाहिए कि किस पॉइंट पे कौन सा एग्जिस्ट करता है. एग्जैक्ट ऑर्डर मतलब एग्जैक्ट ऑर्डर कौन से ऑर्डर पे कौन सा पॉइंट किस ऑर्डर पे मतलब सेट करते हैं. तो मैं अभी आती हूँ पानी भर के, बस आई एम थ्रस्टी. मैं अभी आती हूँ पानी भर के. Then we're gonna move forward. Yes, dude. Yeah, back, dude. So इतना हो गया. Vector 3s. Vertices represent each vertex of our mesh. There are three fields that we need. Each vertex. We need to set the vertices, which is an array of vector 3s. Array of vector 3s represent each vertex of our mesh. Vertices वो होते हैं array of vectors. इस vertices इसलिए जरूरत है array of vector because each vertices each vertices को तीन नंबर मतलब तीन क्या कहता है क्या बोला इससे 3 नंबर्स चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए. मतलब x y z किस पोजीशन पे कौन सा वर्टेक्स एग्जिस्ट करता है, मतलब अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट वो पता होना चाहिए. ओके mesh. Then we also need to set the vertices, which is an array of vector 3s. Vertices represent each vertex of our mesh.
vertices represent each vertex of our mesh. Vertices में जितने भी पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है मैश को. ओके. Then we also need to set the UV. UV this 0 0 0 1 मतलब कि एक्स की पोजीशन पे पहला बढ़ रहा है और ऊपर के पोजीशन पे ऊपर से बढ़ रहा है मतलब वाई से. ओके. This is an ये ना इस क्वाड को खोलना होगा. स्पेक्ट्रल थिंकिंग. array of vector 2s, So the UV uses an arrow which define the part of the texture that matches with a certain vertex. And finally, we need to set the triangles. मतलब पूरे पहले वर्टिसेस फिर उसके यूवीएस कौन सा पोजीशन किस पोजीशन पे है फिर से ट्रायंगल Which is है. an array of ints, which define the Which array of friends? vertex index, and 3 of them make up a polygon. पहले वर्टेक्स फिर इंडेक्स 3 of them make up Okay, polygon. so let's set them all up. First, let's make some local arrays. We're going to Let's set them all first. Let's make a set them local up, array. and only in the end do we assign it to our mesh. So we need an array polygon. Okay, so let's set them all पता है क्यों मुझे डर लगता है एंजाइटी होने लगती है कि मुझे समझ में आएगा या नहीं. First, let's make some local arrays. We're going to set them up, and only in the end do we assign it to our mesh. पहले सेट देम करेंगे फिर असाइन करेंगे मैश. So we need an array of vector 3s for our vertices. ओके. वेक्टर्स ने मेमोरी में वेक्टर क्रिएट कर दिया. Then we need an array of vector 2s for our UV. वेक्टर 2 यूवी के लिए 3 के लिए वर्टेक्सेस. ओके समझ में आ रहा है क्योंकि 3 पॉइंट्स चाहिए वर्टेक्स को एग्जिस्ट करने के लिए और यूवी नंबर्स के लिए इसके 2 ही काफी है फिर. And finally, we need an array of ints for our triangles. So let's do it. इतना सोचूंगी तो क्या होगा. Okay, so what we did here, what we have to do here is vector 3 उसका array बनाना है फिर vertices के लिए new vector 3 अभी हम assign करेंगे. Why we are doing this? Because we need 3 numbers x, y, z. We need 3 position numbers x, y, z for the exams vertices. And vector 2 UV new vector 2 array. Fill int triangle, the triangle new int. मुझे ढेर सारे बनाने होंगे नहीं.
shape, vertices. ओह उसके ऊपर बनाना था हमने. Alright, so we do it, we set them all up, and finally we upload them to the mesh. अच्छा तो इतना हमने सेट कर दिया. सेट अपलोड. अच्छा सेटिंग ये लिख दूं ताकि अगली बार बनाओ तो याद रहे. सेटिंग setting this mesh हमने यहाँ पे वर्टेक्सेस क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं मैश से. जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने मैश को मतलब हमने जो मेमोरी में न्यू मैश बनाया था ताकि जितने भी वर्टेक्सेस पॉइंट्स मतलब वर्टेक्सेस मिला के हम जो कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस मैश में अपलोड कर सके. तो हमने यहाँ पे मैश फिल्टर में से असाइन किया ताकि मैश में जो भी ऑब्जेक्ट हम डालें वो सारा मैश फिल्टर पे विजिबल हो जाए और वो जाके सीन पे विजिबल हो जाए. So basically what we did here we made a new mesh in memory और उस मेमोरी को हमने मैश फिल्टर से असाइन किया ताकि हम इस मैश में जो भी चीजें अपलोड करें, जो भी ऑब्जेक्ट बनाए वो मैश फिल्टर पे अपलोड हो जाए और सीन पे वो विजिबल हो जाए. और यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमने सेटिंग अप किया है, सेटिंग vertices, यहाँ पे setting vertices UV and triangle setting triangle for to upload on mesh. तो यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं. यहाँ पे हमने mesh लिया, इससे मतलब जो हमने वेक्टर बनाया था पोजीशन के लिए वर्टेक्सेस के, हमने मैश वर्टेक्सेस पे अपलोड किया. फिर मैश डॉट यूवी फिर मैश डॉट ट्रायंगल्स आज भी Alright, so far so good. Now as you can see we need to define a size for our arrays. So let's start off with the simplest thing we can render, which is a single polygon. In order to create a triangle polygon we need 3 points. So in here we're going to have 3 vertices. We are going to have 3 vertices. Then the UV is always the same size we can render, which is a single polygon. पहले मैं 3 से क्रिएट करूंगी फिर बड़ा करूंगी. 3 ट्राई करते हैं. We need to define a size for our arrays. So let's start off with the simplest thing we can render, which is a single polygon. In order to create a triangle polygon we need 3 points. So in here we're going to have 3 vertices. Then the UV is always the same size as the vertices, so we also have 3. And finally the triangles contains the indexes of each vertex that makes up a triangle. And a triangle is made up of 3 points, so in here again we're also going to have 3. We also have 3. And finally the triangles contains the indexes of each vertex that indexes of each vertex. जो triangle content होता है indexes of 3 vertex.
इंडेक्सेस ऑफ ईच वर्टेक्स, मतलब हर एक ईच वर्टेक्स जो पॉइंट्स है उसके इंडेक्स, मतलब 0,1 0 0,0 0,1 ये सब कंटेन करता है, वो भी 3 makes होगा. up a triangle, and a triangle is made up of 3 points, so in here again we're also going to have 3. Alright, so just like this. Okay, let's do it. यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 क्यों लिखा, हाँ 3, यहाँ पे 3, हम लोग 3 ट्राई करते हैं, मुझे भी समझना है, उसके बाद तो नंबर्स को चेंज करेंगे वाटर के लिए. फॉर वाटर we need to do that. Let's test and inspect our mesh. Okay, so here we are, we still can't see anything, but let's inspect our mesh. And there it is, our mesh now One is triangle, 3 mesh, 3 It vertices. has 3 vertices, it has UV and 1 triangle, 1 polygon triangle. So let's do it. Let's check it. आज भी मुबारक इश्क मुबारक इश्क मुबारक इश्क मुबारक. तो हमारा यस यहाँ पे दिख रहा है 3 ट्राई वर्टेक्सेस 1 ट्रायंगल. एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे नंबर चेंज करके देखते हैं. ओके, यहाँ पे हम लोग 6 लिखते हैं, 6 6, क्योंकि 2 ट्रायंगल बन गए, मतलब 2 ट्रायंगल मतलब 1 स्क्वायर. मुबारक इश्क मुबारक इश्क मुबारक. रोब्लॉक्स मैंने 2 दिन से नहीं छुआ भाई. कोडिंग तो मैंने कल छुआ था, वो भी इतने दिन बाद. पता नहीं क्या ही होगा. आई एम वेरी वरी अबाउट माय 6 बटे 2 ट्रायंगल बन गया. वाओ, देखूंगी कैसे मैं, लेकिन अभी 3 से काम चलाते हैं क्योंकि अभी मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहती. सो लेट्स डू 3. ओके, यहाँ पे हम सेव करके सीधे वहाँ पे चलते हैं. अपना हो रहा है. Alright, great. Yeah, great. And here let's define our vertices. Let's define our vertices. Let's define our vertices. Let's define our vertices. आज भी यहाँ पे स्टेप लिख देती हूँ ना. Step 1 then यहाँ पे step 2, ये step 3, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर में रखते हैं. यहाँ पे यस, ये थोड़ा डिफरेंट कलर में हो जाता है. मैं ऐसे करती हूँ, ये हो जाएगा स्टेप 4. 3 पॉइंट्स लगा देते हैं. I don't know why I do this. लेकिन 3 पॉइंट्स नहीं रहते तो मुझे इरिटेशन होने लगता है. So let's do this. What? Vertices 1 vertex. So we're going to have 3 vertices. 3 vertices. Okay. पहला For vertex 0, let's put it on new vector 3 on 0 0.
Oh, 0 0 0 0. The answer is 0 0. Okay. Then for the 1, let's put it right above. So on 0, 100. 100 क्यों किया इसने? वो तो 0 1 है. And finally for the third vertex, let's put it up and to the right. So we're going to set it to 100, 100. वो 1 1 जाएगा ना. 1 1 वहां से 1 1 क्यों जाएगा? क्योंकि 0 1 हो गया यहाँ पे, वहां पे 1 1 हो गया क्योंकि दूसरे पॉइंट पे आ गया. 0 पर ये 0 देखते हैं, पहला वाला 0 और यहाँ पे 1 जाएगा, फिर ये 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1. नहीं, 1 मिनट, मुझे ना आप लिखना पड़ेगा. आई एम कंफ्यूज्ड. हो गया कॉपी. अरे कॉपी में बनाया हुआ था. 0, हाँ, तो पहला का क्या जा रहा है? 0 1 0 1 2, फिर 0 1 0 1 0 0, फिर 0 0, दोनों को जा रहा है 0 0, फिर दूसरे पे 1 चला जा रहा है, 2 3 चला जा रहा है. ओके. और नीचे से 0 1 2 3 चला जा रहा है. ओके. 1 2 3 0 1 0 1 0 0 1 2 3 0 1 2 0 1. ये पॉइंट बना, 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 ये पॉइंट बना. तो ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, दोनों 0 0 होगा. 0 1 क्यों होगा ऊपर? हाँ, 0 1 इसलिए होगा, ऊपर 0 0 नहीं होगा, ऊपर होगा 0 1, क्योंकि नीचे से भी तो काउंट करना है. एक को y, ये y ले लो और ये x ले लो. 0 हमेशा x होता है और ये y होता है. ओके. 0, हाँ, तो सबसे पहला हमेशा x होता है, तो x हो गया, ये हो गया 1 हो जाएगा. और ये तो चलो पहला वाला हमेशा एक्स वाई होता है, तो x ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1. तो ऊपर का तो 2 होना चाहिए ना. नहीं, यहाँ पे 0 0 शुरू होता है, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 0 ही रहेगा और ऊपर चला जाएगा 1. हाँ, समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है. आई एम गेटिंग इट गाइस. तो यहाँ पे 0 1 2 हो जाएगा और x तो 1 0 होता है, ये भी 0 ही होगा, तो 2 0 ऊपर 1 हो जाएगा और उसका 2 हो जाएगा. तो 2 and 1. ये बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि मुझे दिमाग में कुछ नहीं रहा है. हमेशा 0, तो जो 2 zeros होते हैं वो पहला तो x होता है और दूसरा y होता है. तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3. काश मैं दिखा पाती, कॉपी बना रही हूँ ना. 1 2 3 4. अच्छा, बनाओ, क्या क्रीटा पे करते हैं? ठीक है, क्रीटा पे, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ तो दिखाना तो पड़ेगा सबको, चाहे कोई देखे या ना देखे. तो मुझे उतना बेसिकली उतना समझ में नहीं आ रहा, सो क्रीटा पे ट्राई करते हैं. ओके. क्योंकि मुझे वाटर बनाना है तो मुझे वो चीज समझना पड़ेगा. ये तो चलो सिंपली बता रहा है, लेकिन मुझे वाटर से बनाना है, तो एसिड वाटर मुझे उससे बनाना है, तो मुझे अच्छे से समझना होगा क्योंकि मुझे ट्राई करना होगा. तो यहाँ पे हम बेसिकली ट्राई कर देते हैं. ओके, पहले इसे इरेज करते हैं और मैं इसे बनाती हूँ. क्रीटा पे ट्राई करते हैं. ठीक है, मैं पॉइंट लेगा थोड़ा सा बड़ा. यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया. और देखो मेरी मैथ बहुत वीक है,
जिसकी वजह से मुझे तो ऐसे करके समझना ही पड़ेगा। और 2 जीरोस होते हैं, मतलब एक होता है एक्स एंड वाई। तो मैं ऐसे बनाती हूँ तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि जब मैं वाटर बनाऊं तो मुझे ढेर सारे ट्रायंगल्स चाहिए। उस ट्रायंगल्स को बनाने के लिए मुझे ढेर सारे वर्टिसेस चाहिए। उस वर्टिसेस को मुझे ट्रायंगल में बदलना होगा, खुद से ही करना होगा। ठीक है, अब इसे छोटा करते हैं। वैसे मेरे पास है ड्राइंग टैबलेट, सामने ही पड़ा हुआ है, लेकिन यूज नहीं कर रही। तो हमेशा क्या होता है, मेरे पास 0 और 0 है, और ये हमेशा होता है x और ये हमेशा होता है y। तो पहला हो गया, यहाँ पे लेते हैं 0 क्योंकि ये पहला इंडेक्स से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे करते हैं 0, और ये होता है x। ठीक है, ये होता है हमेशा x, तो ये यहाँ से जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 0 1 होगा। और ये हमेशा क्या होता है, दूसरा वाला y होता है। तो यहाँ पे 0 हो गया, नहीं 0 हो गया, हाँ ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 0 1, फिर ये हो जाएगा 0 2, और ये हो जाएगा 0 3। ओके गॉट। और यहाँ पे x लेंगे तो ये हो गया 1, तो ये तो हमेशा 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ से 0 नहीं, यहाँ पे फिर भी 0 ही होगा। हाँ ये हमेशा 3 ही होगा, 3। और ये हो गया 2 3। अभी मुझे दिखाना है ना, डीप सीक को मुझे ये चीज दिखाना है, तो मुझे थोड़ा अच्छे से लिखना होगा कि समझ में आए उसे। पर फिर दूसरा कुछ लिख देगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर मुझे वही गुस्से में जो हम लोग चैट जीपीटी को लिखते हैं जब सेम रिजल्ट नहीं दे रहा होता जैसा हम मांगते हैं, 0 1 2, और यहाँ पे तो 3 होगा, क्योंकि हमेशा जो 0 पहला होता है वो y x होता है, फिर x y, फिर x, इसी अच्छे से y बना देते हैं, y y x y x। और तो ये हमेशा x होता है, तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो ये हो गया 3 तो हो जाएगा 1 2 3 4 3 ये। ओके, सब प्रैक्टिस कर लूँ, कंफ्यूज ना हो जाऊँ मैं वाटर बनाते टाइम, एसिड वाटर बनाते टाइम कंफ्यूज ना हो जाऊँ यूनिटी में। अब 5 3, तुम लोग को सिंपल लग रहा होगा ये चीजें, लेकिन मैथ मेरा वीक है, तो स्पाइटल थिंकिंग बनाने के लिए, स्पाइटल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। 0, तो ये हमेशा x की पोजीशन, दूसरा वाला नंबर हमेशा x होता है, तो यहाँ पे हमने 0 रख देना है। 0 नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ही जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। देखो इसी चीज में मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, ये हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, नहीं 0 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, तो ये ऐसे जा रहा है ना 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 2। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये 0 ही रहेगा, क्योंकि ये अपवर्ड जाएगा, अप साइड जाएगा, y अप एंड आउट, y का मतलब होता है अप एंड डाउन। तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से 0 1 2 2, और ये हो जाएगा 1, यस, और ये हो जाएगा 2, क्योंकि 0 1 2। कितना कंफ्यूजन होने वाला है मुझे वाटर बनाने में, तो इसी में कंफ्यूजन हो गया। 0 1 2
फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 0, 4, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 9, हाँ 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2, ओके। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, ओके। तो ये हमारी प्रैक्टिकल थिंकिंग में मुझे अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन बनाते टाइम ठीक है, देखते हैं। अब इससे मैं क्या करूँगी, स्क्रीनशॉट लूँगी और भेजूँगी डीपसीक को। Where is DeepSeek? Bro, I tried spatial thinking, so I can zero first. 0 is always x, and second one is y. Yes, you're right. Is your grand 0 0 0 1 0 2 next to 0 0 0 0 0 ही दिखा रहे हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 नहीं होगा, पहला 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 Add index y into width plus x, right? Add and underscore and formula do index में y into width plus x with y into width plus x. What is formula discovered? Index 0 0 2 1 0 index 0 0 index 2 1 what is the next here? 0 x 0 y x 0 y 0 next to x 1 y 0 x 1 0 x 2 x 3 अच्छा 6 बनाया था क्या, 6 बनाया, नेक्स्ट 1 0 x 0 x 0 I next to 1 1
0. Index 3, 3, y 0. फोर अच्छा 3 y 0 y y 0 y 0 x 1 x 1 very short. Next, the slot number where material is sorted into array. Like how many materials first? How many materials first? Raw. By term with 3. How many materials in 3 with 3 down across x with 1 0 1 2 and then E4 takes us with how many results? I have 4 raw x and 4 vertices x next if there's contain 3 vertices index almost but small collection with vertices across one row, not total rows. एक रॉ में कितने you said mean if one row contain 5 vertices, its
with index in list all vertices position. I will get five height, 2 rows, 1 row by 1. अच्छा तो ये y है, y2 है, और 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 x 1 x2 x3 x4. पोजीशन क्या होगा y का तो 0 ही रहेगा. y1 y2 मतलब रॉ, y मतलब रॉ है, कितने रॉज हैं, विथ मतलब एक रो में कितने पॉइंट्स हैं, और x मतलब x विद में ही हमने x को डाल दिया है, मतलब एक स्लॉट बनाना है, उसमें x को डालना है. पहला रो 1 0 5 रो 2 मतलब y 1 6 5. So basically, what we are doing is we are taking each row one by one, which is y. Then we make a variable called where we are storing each vertices which exist in one row, which is first y, and storing in index 2 to use for position 2. Yes, exactly right. In simple word, pick a row y, matlab 1. Each vertices in that row
हैज अ पोजीशन y, फॉर्मूला y, बीच रो में जाओ, फिर with मतलब give each vertex is a unique index number, give each vertex is a unique index number, this index number used to be y plus x this vertex plus with itself self into good question, you are thinking deeply. Why with because without plus x with x, without x with vertex of the raw 5 index vertex first vertex of the raw मतलब एक raw में 5 indexes है मतलब 5 vertexes है, that's it. Then with a plus move to correct column. Example now 1 raw x2 index 7 1 2 3 1 2 3 4 पता नहीं रूट विजुअल रॉ 1 5 मतलब ऊपर लास्ट से जा रहा है पहला हमेशा मुझे शुरू होता है 5 6 7 8 9 5 वाई तो अपने आप ही काउंट हो जा रहा है ना, ये तो रॉ है 0 1 2 3 4 एक रॉ में 5 2 3 5 3 empty vertices in one row and there are 5 rows. These are 5 rows जो हमेशा 0 0 से यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 row 1 2 3 ये x को काउंट कर रहा है और y को काउंट कर रहा है x is a column 0 0 पहला वाला तो वैसे भी बंद हो जा रहा है ओ तो ये पहला कॉलम है ये पहला कॉलम है तो ये तो 0 ही होगा y तो हमेशा हर वक्त पे 0 ही होगा 0 0 0 और दूसरे पे तो हमेशा y 1 1 रहेगा 2 2 2 रहेगा 3 3 3 रहेगा 4 4 रहेगा और x क्या होगा इसमें x बदलेगा क्योंकि दूसरे वाले में x होगा 1 2 और दूसरे वाले में भी तो x रहेगा 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
यहाँ पे 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 4 4 यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो सही है 0 कॉलम 4 में ये 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, कैसे सजा रहेगा। नहीं एक्स भी तो इसमें वही रहेगा 1 2 3। तो पहले रॉ में तो हर चीज 0 ही रहेगा, 0 1 2, तो 0 पहला रॉ में 3, फिर 0 0 0 रॉ उसमें भी 3 वर्टिसेस हैं, ये 1 2 मैं पहला रॉ 3, दूसरी रॉ में 3, और 1 0 3 4 तो ये 0 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0 1 0 2, यहाँ पे 3 3 3 4 5 मैं रखती हूँ संभाल के। समझने में वक्त लग रहा है। सो इंडेक्स पाने के लिए उसने ऐसा किया कि हर एक एज का इंडेक्स मिल जाए 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसने क्या किया, उस जगह को पाले हैं। सो टू गेट ईच vertices index number, he took each row one by one in while, which is then first 0, in second row it's 1, then 2, then he, then you took, then it took with which represent vertices and plus with x. X, which is 1 2 0 1 2 3 in each row is 4
vertices in each row and plus, so it get mixes. Yes, it was correct. You said perfectly. If which row, while how many vertices per row, how many vertices per row, which column is that row? Why because you refuse to memorize, you wanted to truly understand. It is long, what's this for you? 2 times over. Right. Learn fast, takes time, follow fast, remember forever. Can't explain, can teach others. So basically ये क्या कर रहा है फॉर्मूला कि y क्या है, y हमेशा each रो को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो y क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 रॉस है, ठीक है, 4 रॉस है और हर एक रॉस में ये हो गया पहला y, ये हो गया दूसरा y, ये हो गया तीसरा y, ये हो गया चौथा y. तो ये 0, यहाँ पे हम देख सकते हैं y पे हमेशा 0 है, 0 0 0 0 0. तो ये y हमेशा 0 है, ये भी y 0 है, ये भी y 0, ये भी y 0, ये भी y 0, ये भी y 0. सो बेसिकली ये y हो गया 0. फिर दूसरा रो हो गया इंडेक्स, दूसरा रो हो गया. तो यहाँ पे हम दे सकते हैं दूसरा रो में पहला रो, ये 0 0 रो, ये दूसरा रो जिसे हमें 1 करना है. तो हर चीज में 1 ही है, ये भी y 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है. और दूसरा तीसरा, इसे हम तीसरा रो मानेंगे, नहीं बोलेंगे दूसरा रो. ये तीसरे रो में 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है. और ये तीसरे चौथे रो में क्या है, 3 है, 3 है. तो वही बेसिकली रो ले रहा है. और ये हमें x जो हमारा हमेशा 5 है, जो ये x हो गया 0 से, जो 5 6 वर्टिसेस है लेकिन 0 से हमेशा शुरू होता है. तो ये हो गया x 1 2 3 4 4 5, मतलब कि एक विथ मतलब 5 वर्टिसेस है, लेकिन इसके पोजीशन लेने के लिए हमने x यूज किया जो है 1 2 3 4 5. दूसरे रो से इंटू होगा तो यहाँ पे जाएगा, फिर इंटू होगा 1 से, मतलब 0 से इंटू होगा. तो मान लो 5 है, पहला रो हो गया 1, फिर 5 विथ मतलब 5 वर्टिसेस इंटू 1 इंटू 0 मतलब 5, ये 5 पोजीशन होगा, नहीं 1 हो गया. यहाँ पे 6 वर्टिसेस है ना, तो वहां पे 6 होगा, तो ये 6 हो गया, 6 फिर 0, तो ये 6 हो गया, क्योंकि ये 5 होगा तो ये 6 हो गया. फिर दूसरे पे मूव करेगा तो हो जाएगा, तो रॉ तो 1 2 मतलब 1 ही है रॉ, तो रॉ 1 इंटू 5 मतलब 5 वर्टिसेस है 5 और 1, क्योंकि ये x है 1, तो ये हो गया. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ना 1 इंटू 5 प्लस 1. हमारे पास क्या आया, 5 नहीं आया, 6 वर्टिसेस है हमारे पास 6, तो हमारे पास आया 7. उसका लिखते हैं इसका 0 इंटू 6 प्लस कौन सा इंडेक्स था ये, 0 1 2 3 4 5, तो हमारे पास बचेगा एब्सोल्युटली 5. अब समझ आ रहा है मेरे को. इसका रैंडम वाला देखते हैं. तो ये कौन सा है, तीसरा रो, तो ये 3, ये 2 पे जाएगा ना, 2 पे जाएगा, ये 2 इंटू 6, क्योंकि हमारे पास 6 वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस x, तो x हमारे पास कौन सा वाला है, 2 है, क्योंकि 1 2 3 नहीं 0 3, हमारे पास 3 आएगा. तो इसका क्या होगा आंसर, कौन सा इंडेक्स होगा ये,
ये इंडेक्स होगा 6 2 जा 12 13 14 15। हम चेक कर लेते हैं कि 15 सही है या नहीं। 15 सही है या नहीं, तो हो गया 1 2 नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो बेसिकली इंडेक्स नंबर पाने के लिए सो बेसिकली मैं समझ ही गई, फाइनली समझ गई। अब आगे बढ़ते हैं। How long it took, dude? 2 hours. But okay, it was worth it. But why we wrote 100? एक तो गैस 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे तो 0 ही होगा, पहला रो है, दूसरा रो में 1 ही होगा। ऐसे देखते हैं ना, 0 1 ही होगा, 2 होगा, 2 ही होगा इसमें, 1 ही होगा इसमें, 2 होगा, तो ये 100 ही हो गया। I took 100। अभी पता करते हैं वर्टेक्सेस। मुझे ऐसे समझ में आया तो मैं भूलूंगी नहीं, है ना। 0 न्यू, वो असल में इंडेक्स नंबर लेने के लिए उसने इतना किया। तो इस चीज को कॉपी करते हैं, सी से कॉपी करते हैं। यहाँ पे ये क्या हुआ, जेड से, यहाँ पे बी, यहाँ पे वर्टेक्सेस 0, मतलब एक ट्राइंगल, मतलब हाफ एक ट्राइंगल में 1 2, ये तीसरा वर्टेक्स हो गया, मतलब तीसरा वर्टेक्स। सोचना पड़ेगा, ये 1 2 3 वर्टेक्सेस, 3 वर्टेक्सेस। पहला वर्टेक्स का आंसर 0 0 0 मतलब वहाँ शुरू होगा। ओके डूड, ऊपर जाएगा तो दूसरे रो, दूसरे वर्टेक्स, दूसरे रो, ये तो 0 रहेगा पहला वाला, और दूसरा हो जाएगा आई, दूसरा दूसरा 100 होगा ना। ऊपर वाला तो 0 ही रहेगा क्योंकि वो तो इंडेक्स है, ऊपर वाला भी 0 ही हो जाएगा, और दूसरे रो पे जाएगा तो 100 हो जाएगा। ओके, फिर नीचे जाएगा एक, तो ऐसे बनेगा, फिर वो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो पहला वाला 0 होगा, और नहीं पहला वाला 0 होगा, पहला वाला तो 0 ही होगा, और दूसरे पे जाएगा 0 ही हो जाएगा। 100 क्यों हुआ, वेट व्हाई दिस इज 100। अच्छा ये दूसरे का ले रहा है, ओ ये पहला पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। 0 1 की, हाँ ऊपर ऊपर जाएगा ना तो 1 हो जाएगा, पहला रो, पहला रो, वही मैं सोच रही थी, मैंने दूसरे को ले लिया। पहला रो, पहले एक पॉइंट बनाया उसने, फिर ऊपर गया तो 0, तो x तो 0 ही रहेगा, y हो जाएगा 1, मतलब दूसरा रो, और फिर उस रो में दूसरे जगह जाना है तो हो जाएगा एक बढ़ जाएगा, और दूसरे रो का तो 100 ही रहेगा, क्योंकि एक रो बढ़ गया तो वो था 100, ऊपर से 0 गया, 0 से 1 गया, तो पहला रो में तो 1 1 1 ही रहेगा, आगे वाला बढ़ेगा 1 2 0। मुझे पूछना है वाई टू 100, डू वाई टीचर 100, like it should be 1 1 1, right? in short very short, मैं पढ़ नहीं सकती इतना,
No difference, just scale preference like 0 100. Small water, large water. Work same. Teacher is under for easy resolution. Oh, oh, like in a triangle, how how spacing. In a space, in a space, a triangle is visible. Number rule of thumb: smallest 0.5 minute, 10 minute part. For your water, distance between vertices, distance between vertices, visible, invisible mesh, itna, too big, 100, huge camera may not see. Good, one sentence, one, two, one unit, clear size, if close to your top border, clear, X, Y, 0 point, X, I can't correctly convert this. How big is spread appears? Their scale, how big spread products is in right. Smaller, because there is small 0 0.2.
Zero and 0, 1, 1, 0, and 2, 1. Oh yes, you can do that. Your thing is correct. Vertexes, uh, vertex दूसरा 1 मतलब ये ऊपर की ओर से मतलब हॉरिजॉन्टल वाला है और ये नीचे से जा रहा है not random point. Use number, but what I need even spacing. Why we use number? Use 100 to make mesh visible now. One mesh table. Hard to see, easy to see. Use 16. Oh, तो ओ तो मैं साइड टू साइड कर सकती हूँ 100 लेकर के चलते हैं बाद में धीरे धीरे डिसाइड करूँगी फिर प्रैक्टिकली जब तक करूँगी नहीं मेरे को समझ नहीं आता 100 लेकर स्पेस Are 3 vertices. Now for the UV, let's ignore it for now. हाँ ये क्या हो रहा है वेट आवाज नहीं आ रही मेरे को So on 0, 100. And finally for the third vertex. What he said? याद नहीं हो लार्ज बनाने के लिए बॉक्स तो मैं यहाँ पे मतलब एक्स एंड वाई कुछ भी फिक्स कर सकती हूँ I can fix Let's it. put it up and to the right. So we're going to set it to 100, 100. Alright, these are our 3 vertices. Now for the UV, let's ignore it for now. And finally, vertices the point size किया अब ये UV मतलब उसके इंडेक्स को ignore कर रहा है अब triangle. And finally for the triangle. This is Triangle 1, 2, 3. is an array of ints which is array of contains the index of the vertex. This is the array of ints. Array of ints. Triangles array of ints. Which contain the index of vertices. This is array of int. Triangle एक array of ints है जिसमें vertices है जो index contain करते हैं. तो vertices को index contain करते हैं. अच्छा
अब समझ में आया, जो वर्टेक्सेस है वो पॉइंट्स है, ट्रायंगल इंडेक्सेस है वर्टेक्स का, मतलब ट्रायंगल एक एरे ऑफ इंट है जिसके अंदर जितने वर्टेक्सेस हैं उसके इंडेक्स है, which contain index of the vertices that make up a polygon. पॉलीगॉन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ दूर। Triangle is an array of int which contain the indexes of triangle, indexes of vertices. Y इंडेक्स, ये भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, y इंटू प्लस x, y is raw, width is number of vertices, one row, one each row, one row contain x is to the index. So let's start our triangle on vertex 0. This is an array of ints which contains the index of the vertices that make up a polygon. Which make polygon. So let's start our triangle on vertex 0. Then we connect vertex 0 into the vertex on index 1. And finally we connect it into the index 2. And that's it. Now one thing that is very important in here is the order of the indexes. Each polygon has a face, What is the order of the indexes? Each polygon and has back face, and some shaders won't call the back face. What defines the front and back of the polygon is the order of the indexes. In order to see the front face, always set the indexes in a clockwise order. zero. Here you can see that our triangle is going from the Zero. origin, then going up, Clockwise. and then up and to the right. If we swapped it and did up to the right to the up to the down, then we would have set our triangle counterclockwise, which would swap the front and back. So always keep that in mind, and in most cases तो वो ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो होगा, जीरो वन, जीरो से शुरू होता है, जीरो वन टू थ्री हो जाएगा, ये थ्री वन जीरो वन टू थ्री फोर जीरो वन टू थ्री. just set it to clock if we swap indexes in a clockwise order. So here you can see that our triangle is going from the origin, then going up, and then up and to the right. If we swapped it and did up to the right to the up to the down, then we would have set our triangle counterclockwise, which would swap the front and back. What is counterclockwise? What is direction term describe a circular or rotation of the opposite direction of the hand. The opposite direction of the reverse. So always keep that in mind, and in most cases just set it to clockwise. Alright, so now that we've set everything up,
ओके, सेटिंग ट्रायंगल, depth 5, now setting triangle, triangles, मैंने यहाँ पे इंट लिया था, एरो ऑफ इंट, तो 3 है, 3 बनाए होंगे। एक ट्रायंगल 3 वर्टेक्सेस कंटेन करता है, काफी प्रैक्टिस करनी है इसकी। ट्रायंगल 3 वर्टिसेस कंटेन करता है, तो 3 मिला करके एक ट्रायंगल होता है। Let's 3 लिखा मैंने, 2 हुआ, 2 test. Okay, here we are, and we still can't see anything. Let's inspect the mesh, and there you go, everything is correct. The vertices, triangles in the UV. And the reason we can't see anything is, like we've seen previously, we need a mesh filter for the mesh, and then we need a mesh render. And yep, we can finally see our nice polygon. पता नहीं मैं देख पाऊंगी कि नहीं। सेव किया, यूनिटी में गए, कोई मटेरियल नहीं डाला हुआ था, फिर भी मैं पता नहीं विजिबल होगा भी या नहीं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैश रेंडर लगा दिया, ऐड कंपोनेंट, डन है इसमें, ऑन करते हैं। Dude, ये क्या, साइज मैंने कितना ज़्यादा बड़ा कर दिया। चलो अभी के लिए इतना सही है, देखते हैं क्या होता है, छोटा करूँगा। इसका तो काफी अलग है। इसका पहले नंबर चेंज करते हैं, ओके। तो साइज चेंज करके देखते हैं, 30 रखते हैं। थर्टी 3 वर्टेक्सेस हैं, पहला आपका 30। ये बाहर क्यों बना? तो व्यूअर साइज करनी है ये,
मेरा इतना घटिया क्यों बन रहा है डोर? मैंने क्या गलती की? जैसे वन रखते तो वन मतलब एक तो जीरो रहेगा ना। ये पहला वन होगा, दूसरे में जाएगा तो वो तो जीरो रहेगा, वो वन रहेगा। और फिर वो पहले से जाएगा, दूसरे में जाएगा तो जीरो, वन रहेगा तो वन, दूसरे में जब वन वन रहेगा। चलो लेट्स सी ना। ये पीछे क्यों चला जा रहा है? वन जीरो नॉट इनफ। मेरा ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल अच्छा है। हाँ, माइन इज योर। मेरा ट्रायंगल इतना वियर्ड क्यों आ रहा है डूड? इसमें रखती हूँ 40, इसमें रखती हूँ 20। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब बेटर है। ओ
तो 100 करते हैं तो इसे 100 ही होगा, 0 ही रहेगा ना। एक बार इसे देखूँ मैं इसको triangles in the UV. And the reason we can't see anything is like we've seen previously, we need a mesh filter for the mesh, and then we need a mesh render. And there you go, everything's correct. Just set it to clockwise. फिर इसका 100 ये 0 ये 0 और इसका ये जो भी स्केल है इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, स्केल से मतलब हाउ गैप भी नहीं है। जो स्टोर Yes, those numbers are position on axis in over space. If you used one, if you used mesh size 1 unit, mesh size sides. Tilting dot everything so hard to see this. Citizens better define vertices position, define shape, plus also volume stretch volumes. See the two things, both of it from the side. Make mesh look so we can see it. Can I put number like 0 0 then 20 नहीं इसका होना चाहिए 40 20 40 20 0 20 0
ना 0 एक पे जाएगा, 0 0 दूसरे पे जाएगा, तो दूसरे पे आएगा तो 0 होगा ना, पहला तो 0 ही होगा। 0 इस पे जाएगा 40 20। Yes, you can put any number. We use specific for water. For water use 40 ऊपर जाएगा। 0 ऊपर 0 20 फिर 20 0 रहेगा, फिर ये हो गया 0 पोजीशन। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 20 क्योंकि मैं हाइट ज़्यादा रखना नहीं चाहती। और ये हो जाएगा साइड में मूव करेगा 0, वहाँ पे साइड में मूव करेगा तो ये हो जाएगा 40 क्योंकि साइड बड़ा रखना है। हॉरिजॉन्टल का उसका 20, वो तो 20 सेम ही रहेगा, बदल नहीं सकते। अब देखते हैं, जाते हैं। तो इसे 1 रखते हैं ताकि विजिबल हो सके। ओके, तो चलाते हैं। Oh, finally it's visible. इसे थोड़ा सा और चेंज करते हैं। एक बार करते हैं कि y को बड़ा करते हैं, ठीक है। तो सेकंड रो में हो जाएगा y को 40 रखते हैं, इसको एक काम करते हैं 50 रखते हैं और इसे 20 रख देते हैं। 0 जाएगा, फिर दूसरे पे जाएगा तो 0 1 हो जाएगा उसका रो, y रो 1 हो जाएगा तो 50 रहेगा और 50 रहेगा। फिर वो उस साइड मूव करेगा तो इसे 20 रखते हैं और वो तो वही 50 ही रहेगा, 50 ही रहेगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखना, जो y वाला पोर्शन है वो लॉन्ग हो जाएगा और x वाला जो है वो छोटा सा हो जाएगा। हमने 1 रखा था कि 20 बना सके, जैसे उसने किया था टीचर ने, मंकी ने। हाँ, सही था ना। देखो ये लॉन्ग हो गया, y वाला लॉन्ग हो गया और x का पोजीशन छोटा पड़ गया। तो सही था डूड। 50-50 रखेंगे तो दोनों बड़ा ही मतलब सेम साइज का हो जाएगा, तो 50 रखते हैं। धीरे धीरे मैं समझ रही हूँ व्हाट वी नीड टू डू। देखो सेम साइज का हो गया, तो उसने 100 रखा था। ये पीछे चला जा रहा है, दिक्कत यही है, मुझे इसे आगे करना है। बट आई गॉट दैट। How big x and y position
Why? These two. I just how to. Got it. कितना वक्त लग गया बस ये चीज को समझने में 3 घंटे होने वाले हैं still I'm not tired I want to learn Alright, so now that we've set everything up, let's test. Okay, here we are, and we still can't see anything. Let's inspect the mesh, and there you go, everything's correct. Reverse these triangles in the UV. And the reason we can't see anything is like we've seen previously, we need a mesh filter for the mesh, and then we need a mesh render. And yep, we can finally see our nice polygon. Awesome. If we inspect the scene, and again put it on wireframe, we can see our nice polygon connect. ये wireframe मेरे पास क्यों नहीं है like I don't have wireframe service job window wireframe parameter audio 90%. wireframe मेरे पास ही नहीं है dude index data searching timeline wireframe I don't have wireframe आवाज आ रही है हेलो आ तो रही है मेरे पास काय को नहीं है Connecting, there's a vertex here, one here, and the polygon connecting, there's a vertex here, one here, and the triangle connecting all of them. Now our polygon is currently not displaying a texture because we did not set the UV. So also not displaying our texture because we do not set that is wireframe. nice polygon connect. Why I don't have wireframe? I wanna see. Why I don't have wireframe window go. Keep the wireframe window. Shaded. Control one window. Control one window.
है ही ना वायरफ्रेम। Thinking there's a vertex here. मुझे एकदम शांति हो जाती है ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। I don't know. One here, and the triangle connecting all of them. Now our polygon is currently not displaying a texture because we did not set the UV. So let's do that. So we're going to set up the UV array. Now in here, the UV array always has the same size as the vertex array. So we have 3 vertices and 3 UVs. Each UV index contains the texture position that should be matched to. Oh, ये वेक्टर 3 है पोजीशन। ओ मुझे लग रहा था कि ये इंडेक्स 0111102 है। ओ these two numbers are just with how x and y triangle। ओ वेक्टर 3 है, मैं यूज कर रही हूँ। क्या यार, मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं सोची थी यूवी को कहते हैं, यूवी मतलब एक्स एंड वाई। यूवी को यहाँ पे एक्स एंड वाई बोलते हैं। यूवी मतलब एक्स एंड वाई, यूवी फुल फॉर्म। यूवी फुल UV, U and V, मतलब X and Y are picked because they are right before X and Y in the alphabet. UV, XY, UV, UV को हम लोग XY बोलते हैं, तो UV यहाँ पे कभी मैं कंफ्यूज थी। यहाँ पे मैं 1 2 मैं यहाँ पे यूवीज को सोच रही हूँ। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि वेक्टर 3 की जगह यहाँ पे जो दो यूनिट्स है वो यूवीज है। अब समझ आते, these are not UVs, these are just the size। जैसे x and y होता है पोजीशन के लिए, उस पोजीशन कितना बड़ा चाहिए। एक्चुअल में अब हम यहाँ पे UV सेट करेंगे। नाउ सीक्वेंस वाइज होने चाहिए ना। नाउ UVs step 6। No. The vertex in that exact same index. Over here on the project files, I have this texture. As you can see, it has a bunch of different colors, so we can easily see what part of our texture is being shown. Now we want to apply this texture to our polygon. I have this texture. As you can see, it has a bunch of different colors, so we can easily see what part of our texture is being shown. Now we want to, over here on the project files, I have these and 3 UV. Each UV index contains the texture position that should be matched to the vertex. Each UVs contain a texture position that should be matched to the vertex. In that exact same index. Over here on the project files, I have this texture. As you can see, it has a bunch of different colors, so we can easily see what part of our texture is being shown. Now we want to apply this texture to our polygon. In here, the UVs are vector 2s, and they are normalized vector 2s. That means that the lower left corner of the texture is on lower left corner of the texture, and the upper right point is on 1 1. So we created our polygon with 3 vertices, one on the bottom, then one above, and one to the right. So in order to display this texture, just like the polygon shape, we're going to set the vertex on index 0 into 0 0, so that it displays the lower left corner. Then on the index 1, we want to show the upper left part of the texture, so we're going to keep the x at 0 and the y at 1. And finally on the 2, we want to show the upper right, so we set it to 1. Okay. UV 0 vector 2 new vector 2 UV 1 new vector 2 UV 2 new vector 2
करते हैं तो पहले का 0 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो 0 1 रहेगा, फिर साइड में जाएगा मतलब राइट साइड तो हो जाएगा ये 1 1 दूसरे रो का तो 1 ही रहेगा। While use vector viewing in very simple. Tell me, we use vector 2 for UV because images are completely flat 2D, so they only need two direction width and height. Width and एक्रो में कितने vertices and height मतलब y. Vector 3 has 3 मतलब हर vertices left hand चाहिए हाँ. 2 UV because 2D picture have a no depth. It's mean if we want to create vector 3 for no actually no you still use vector 2 for 3D water image. Even though the water is 3D, the texture image you paint on top of it, like a ripple of foam, is still flat 2D. Oh, here's how 3D water actually works in Vector 2. The shape is 3D Vector 3. The waves are moving up and down Vector 3x and Vector 3 in the actual shape of the mesh. जो हमने वेक्टर लाइक हम इसमें भी यूज कर रहे हैं क्या कहते हैं वर्टेक्सेस में जैसे 3 पोजीशन चाहिए एग्जिस्ट करने की मतलब टेक्सचर movement in 2D. What? To make the water look like it's flowing, but it doesn't make it's a 3D. Instead, script simply slide a water 2D picture across the water surface was continuously changing the 2D vector to 2D vector to 2D vector to UV mover over time. That means the flat rotation slide up and down and down. Summary. Vectors remove the water space up and down. Oh, Alright, that should do it. We assigned our vertices, our UVs, and our triangles. So our mesh has complete information. Let's test it. So here we are, and we still see the same pink texture. The reason is because we need to assign our material. So down here we have our texture. Let's make a material to apply to it. So a new material, call it the same thing. And here, in this case, let's use a very simple shader, so just unlit texture, and we drag our rainbow texture, okay. Now back in our text thing, the reason is because we need to assign our material. So down here we have our texture, let's make a material to apply to it. So a new material, call it the same thing. And here, in this case, let's use a very simple shader, so just unlit texture, and we drag our rainbow texture, okay. Now back in our testing object, we just drag the material. And there it is. And as you can see, the texture perfectly matches with the corners we selected. So down here, the light blue, exactly matching that one. Then up here, the green, yep, and the red, yep. And the rest of the texture is not visible since we did not set the UV to use it. Awesome. the chat distribution. Bro, in UV is putting material like green something. What I do? You need to create a material how the stretch texture of mesh from water just flat tapping.
Find what color texture the mesh shows. Without material, mesh is invisible. Pink arrow color. Empty. What you need to do in Bolivia, create material. Name it water material. Okay, water material. मैं Roblox खेल रही थी ना कल, तो एक लड़की मिली थी, क्या मस्त एक्शन पे बोल रही थी, लाइक उसका अमेरिकन एक्सेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, एकदम मस्त एक्सेंट था उसका. वाटर मटेरियल काफी अच्छा बोल रही थी. क्रिएट फोल्डर का नाम रखते हैं. क्या बोला था उसने? क्रिएट मटेरियल. अच्छा मटेरियल, यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं एसिड वाटर के लिए. टेक्सचर, मैं टेक्सचर रखती हूँ. टेक्सचर इसमें जाते हैं, क्रिएट करते हैं मटेरियल, एसिड मटेरियल, एसिड मटेरियल, मटेरियल, acid material. Make it look like acid water. Select the material inspector. Make it look like acid water में जाते हैं. acid material, हाँ acid material को select किया. Inspector surface. Surface type transparent, so you can see through slightly. Property. Is there a property here? Prop. ये थोड़ा बजाते हैं. Material, surface type transparent, surface type make it look like acid water. ओह मैंने गलत किया, यहाँ पे मेरे को अभी नहीं करना था. नन करते हैं इसे. अच्छा तो यहाँ पे है इंस्पेक्टर. एडिट.
Step 2, explain. Water, surface, tide, this, whatever, now, said, not deliver. No worries. Shading of if you don't see such that yes, I know. Or you unlit if you just want a flat color. Let चाहिए है. Oh. Click the change the shader, find the drop down. Once you set the UPI shader, the center will change UPI. मुझे बताया भी नहीं इसने. URP. There's no lit door. There's lit. There's no lit. It's 2D. नेट देख क्यों नहीं रहा है? हाँ मिल गया नेट.
speed. कौन सा ग्रीन यूज करो बताइए? हाँ ब्लूइश वाला ना, ऐसा ग्रीन तो लाइट हो, दैट्स फाइन। हाँ ये वाला फाइन है। Surface type. There is no surface type. ये देखो तो यहाँ भी लिख गया, यहाँ भी लिखा है। हाँ ये सही है लिख। Surface type transparent. Okay. यहाँ पर इसमें surface spectre surface type. Right here, change the shader. Put the shader down. Okay. Base map albedo. Click the color box next to it. Click a right click. Base map. Which color? Bright green. Easy. Here, alpha. Lower slightly from, so the bottom slightly from. Keep it soft. Toxic blue. Alpha slightly. Go for red ones, material number in the preview, drag it from project. Add my folder into drag it from oh.
तो कहीं से भी ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा डूब। Why that mesh piece be behind this? Why not? Visible. गेम को नहीं आ रहा है ना, गेम में विजुअल नहीं हो रहा है। Because of the sorting layer of Z position. Change sorting layer section press left. Find measuring layer. Select sorting layer to higher layer. For sorting layer है कैसे sorting layer do this. Mesh layer do this है sorting layer. ये तो उसमें आ गई मैं। Previous order layer. ऑर्डर लेयर है ही कहाँ इसमें? Fix to change Z position. Select as order. अच्छा 1 ले जाते हैं, ये है तो 3 पे रखते हैं।
वन पे रखना क्या बट फिर ट्राई करते हैं Z को रखते हैं 7 6 पे क्योंकि इतना लेयर तो किसी का नहीं है भाई फिर भी पीछे ही है not working though right Z work for position or scale. The step change as position or scale. Transform. Auto change. मैं तो ट्रांसफॉर्म में ही जा रही थी पोजीशन जेड अच्छा +5 ओह फाइव कितने वो तो अपने आप पॉजिटिव है यार अब रोटेशन में मैंने 5 रख दिया डूड ये रोटेट हो जाएगा हो गया रोटेट ये होगा 5 नॉट वर्किंग 10 रखने दो फिर भी 10 हो गया 10 होगा ही भाई नहीं करना वर्क कितने हैं select person water English language sorting layer there is no sorting layer now.
मैं थक चुकी हूँ। I need to do something else now. मैश 100 को तो मैंने सेलेक्ट किया। नथिंग पे करके देखूंगी। नथिंग पे तो ये कहीं पे नहीं आया, गायब हो गया। अब देखते हैं। चल कैमरा सेटिंग। थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा, मतलब कुछ ज्यादा ही मैंने अपने दिमाग पे प्रेशर डाल दिया है समझने में, हर एक चीज को समझने में। You are using 3D mesh and it doesn't have sorting layer. What? What? Hey! Keep mesh in there for mesh, add shadow for layer. Select as you want to component. Set whatever. Sorting group. चलो अच्छा है कि ऐसी चीजें हैं यार। Sorting group, चलो फाइनली। यार ऐसा तो बताया क्यों नहीं वे? ये 6 पे रखते हैं। अब मैं ट्रांसपेरेंसी देख सकती हूँ, तो आई कैन
हाँ ये वाला कलर अच्छा है, दैट कलर इज फाइन। हाँ बहुत अल्फा क्लिप, पता नहीं अल्फा क्लिप है क्या बंद करेगा। ये है क्या? नो ये ट्रांसपेरेंसी थोड़ा ज्यादा यू नो ज्यादा नहीं है, लाइक आई वांट कम। ये क्या है? है क्या? सिर्फ 5 रुपए। ऑफ रखो। अब स्टैटिक के छप जा रहा है। तो लाइट लोग करने से कुछ हो नहीं रहा है। एक तो मुझे ये बहुत छोटा चाहिए पहले चीज। अब कल देखेंगे क्योंकि अब मेरे भेजे में बहुत कुछ घुस चुका है और मैं चीज़ों को सह नहीं पा रही। 3.5 घंटे से लगातार से पढ़ते जा रही हूँ, काम ही करती हूँ। इसका पोजीशन सेट करते हैं तब तक, क्योंकि आगे अभी नहीं बढ़ूंगी, अभी थोड़ा सा ट्रायंगल वैंगल बनाऊंगी। What I learned that चीजों को तुरंत टेंशन नहीं लेना चाहिए, यू नो, हमें तुरंत प्रैक्टिकली चीजों को करके देखना चाहिए, वो भी छोटे छोटे लेवल पे, तब हमें सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। और ये चीज मुझे चैट जीपीटी ने एंड ये डीप सीक ने मुझे पहले ही बोला था कि मैं
छोटे से ट्राई करूँ, अदरवाइज अगर एडवांस लेवल पे तुरंत चले जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँगी। इसलिए अगर मैं चाहती हूँ कि थोड़े थोड़े लेवल पे मैं एक दिन एडवांस में चले जाऊँ तो मुझे छोटे छोटे लेवल पे शुरू करना होगा। नाउ आई एम गेटिंग व्हाट डीप सीक एंड चैट जीपीटी वांटेड टू से। देखते हैं क्या होता है। और मैं थोड़ा सा और करूँगी, थोड़ा सा कर रहा है। 4 घंटे बिताऊंगी। सही है। अभी पीसी थोड़ा बंद करूंगी, बहुत गर्म हो गया है। थोड़ा और वक्त काम करूंगी। अभी जाऊंगी कुछ बनाऊंगी, खाऊंगी, भूख लग गई है। पोहा बनाऊंगी सिंपल सा। पता नहीं जिंदगी किसी डायरेक्शन में जा रही है। एआई आ गया है तो सारी चीजें तो अब एआई ही कर दे रहा है, गेम भी बना दे रहा है, पर फिर भी सीखते हैं। What we can do instead of learning? कैमरा आया था तो still we were learning, drawing this and that. Let's take this as just an experiment and skill that I know. I have this skill, I can do it. I know I can do this. तो मुझे नहीं लगता एआई का बनाया हुआ कोई भी गेम खेलेगा, क्योंकि मजा ही नहीं आएगा। जब पता होता है किसी इंसान ने बनाया तो मजा ही आ जाता है। कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अब गेम्स की, वो सब एआई से भरे होंगे। मैं अभी एक नंबर करके आती हूँ, देन थोड़ा सा उसका पोजीशन सही करेंगे, मैश का ऐसा लंबा लंबा करेंगे। थोड़ा सा पुशअप्स मार लो। 2 3 4 5 6 7 8 9
So I'm back after short break. मैं स्टिल इसके बाद भी मैं लाइव करूंगी, लेकिन बाद में रोब्लॉक्स के लिए। उसमें मैं कुछ बोलूंगी नहीं, बस मैं बनाऊंगी और लाइव करूंगी। आ रहा है क्या आवाज? आ रहा है, चलो सही है। तो अच्छा, मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी जब सब कुछ बन जाएगा तब। मैं अभी वो करूंगी, क्या कहते हैं, शॉर्ट्स बना के डालूंगी, वो ज्यादा इजी है। सही है, इजी नहीं है मतलब। मैं कभी कभी बहुत चीजों को मेरे अंदर डर रहता है, बट आई कैन शेयर विच काइंड ऑफ फियर आई हैव। एक दिन शेयर जरूर करूंगी जब मैं बन जाऊंगी, इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, तब जरूर शेयर करूंगी। अंदर बहुत सारा डर है। मैं चाहती हूँ मेरे पास कोई हो जिससे मैं बताऊं मेरे अंदर कैसे कैसे डर है, बट आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई डोंट हैव। मेरे दोस्त इसीलिए नहीं है क्योंकि लोग बुरे हैं। लोग कभी भी मेरे साथ बुरे नहीं रहे, मतलब बाहर के लोग, बस मैं लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाती। मैं जब भी लोगों से बात करती हूँ, लोग मेरे साथ काफी नाइस होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत प्यारे टाइप के होते हैं, बट वही है, मैं लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाती। आई डोंट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स। लोग काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं आज तक जिनसे मिली हूँ अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग रहे हैं, लेकिन अलग अलग पर्सनैलिटी से ही वो मुझसे काफी काइंड हुए हैं, बट वही बात है, मैं कनेक्शन नहीं बना पाती। आई डोंट नो, जिसकी वजह से लोनली फील करती हूँ। ऊपर से पीरियड जब आने वाले होते हैं, पीरियड्स के जो 1 हफ्ते होते हैं, वो और भी ज्यादा वर्स हो जाता है। तब तक इसे हटाते हैं और पोजीशन सही करते हैं, क्योंकि अभी मैं बाद में चीजें करूंगी, अभी नहीं। रात में सबसे ज्यादा अच्छा होता है काम करने के लिए। वही बात है, रात को सोने की वजह से मैं दिन को बाहर नहीं निकल पा रही, लोगों से बात नहीं कर पा रही। वर्ल्ड इज नाइस, ब्यूटीफुल। काश मैं वो डर लोगों से शेयर कर पाती जो मेरे अंदर है। हाँ, so let's do it. Chin shape इसे हटाते हैं, चलो सही करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका साइज डिफाइन करूं। लॉन्ग चाहिए मेरे को, तो इसे हटाते हैं, ये सेफ मेरे को बाद में काम आ जाएगा। मान लो भूल गई, जो भूलूंगी। 0, ये तो 0 हो गया, ठीक है। ऊपर का जो पोजीशन है मुझे चाहिए 50, नहीं चाहिए डूड। अब देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 0 तो 0 रहेगा, यहाँ से एक पॉइंट से शुरू होगा, तो अब ऊपर जाएगा, मतलब पहले रॉ दूसरे रॉ में जाएगा, मतलब जिसे 1 मानेंगे तो वो तो 50, जिसका हाइट मतलब 1 रॉ जो y एक्सिस है उसका हाइट मुझे डिफाइन करना है, तो इसका हाइट मैं यहाँ से ले लेती हूँ। इसे उठाते हैं, इसको हमेशा मैं हाइट के लिए यूज करती हूँ, डू टू हाइट के लिए काम आ रहा है। तो इसके पोजीशन को ले लेते हैं, ये पूरा यहाँ तक रहेगा ना डूड, यहाँ तक रहेगा। तो इसका y पोजीशन ये है, तो इसे क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कहाँ आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। y x, हाँ वही x,
इसे कॉपी करते हैं और इसको तो यहीं पे रहेगा, क्योंकि मुझे दूसरे रॉ मतलब उसी रॉ में तो उतना ही हाइट रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए, विड्थ की हाइट, मतलब विड्थ चाहिए। विड्थ की हाइट में कैसे डिफाइन करूं? हाँ हाँ, ये यहाँ से रहेगा ना, वो तो उतना ही रहेगा। मैं कैसे डिफाइन करूं इस चीज को? आई डोंट नो कि कितना बड़ा होगा, ये मैं कैसे डिफाइन करूं? ट्वेंटी टू, 30 रखते हैं, मुझे नहीं पता, 30 रखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। सेव। ओ, मैंने शायद कुछ गलत वलत कर दिया है। मैंने कुछ गलत कर दिया है, ये ऐसे कैसे हुआ? स्टैटिक था, ये तो स्टैटिक था। ये था, हुआ कैसे ये? इनविजिबल कैसे हो गया डूड? कोड की वजह से क्या हुई? समय 50 रखते हैं। वो नंबर्स की वजह से हो रहा था। आए, अच्छा वो अल्फा पे मैंने कर दिया ना। एडिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लाई, डार्क हो गया। सबसे पहली चीज मैं क्या कर रहे थे? 20 रखते हैं इसे हाइट को, यहाँ पे 20 है, 40 बड़ा 20 रहेगा। देखते हैं।
आई थिंक मैं कुछ गलत समझ रही हूँ। Bye. मैं कुछ गलत समझ रही हूँ ना। इसे हटाते हैं, इसे सेव करते हैं, इसे हटाते हैं क्योंकि मैं बंद कर रही हूँ। मैं बाद में समझूंगी, अब मेरा दिमाग खपा गया है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।